और जो आत्मनिर्भर भारत है, क्योंकि देखिए हर जगह भी जाते हैं हम, ग्रामीण क्षेत्रों में भी अगर स्किल डेवलपमेंट पर काम करेगा तो युवा कहीं ना कहीं पलायन करेगा नहीं विदेशों की ओर भी। और अब तो राजस्थान में भी जो गाइडेंस है वो मिलने लगी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि बच्चों को बेहतर गाइडेंस मिले, ताकि जो उनके पास उलझन होती है कि कौन सा विषय चूज करना है, कौन सी स्ट्रीम को जाना है, कौन से क्षेत्र को चूज करना है, तो उसको लेकर उनमें कहीं ना कहीं उलझन होती है। अभिभावकों को भी उस दौर से गुजरना पड़ता है, लेकिन जब वो गाइडेंस उनके पास बेहतर होगी तो मेरे ख्याल से शायद उनका वो पलायन भी रुकेगा और उनको गाइडेंस भी मिलेगी कि आखिर उन चुनौतियों का सामना कर सके। और इस बार जो बजट है केंद्र सरकार का वो मुख्य रूप से पीएम श्री स्कूलें और स्किल डेवलपमेंट पर ही मुख्य रूप से देखा जा रहा है। और इस बार भी क्योंकि शिक्षा में हमेशा से ही अच्छा बजट मिला है, और ऐसा लग रहा है कि इसे ये फोकस रहेगा और हो सकता है इसे लेकर भी बजट में इसे शामिल किया जाए। और चलिए एकता जी क्या कुछ कह रहे, एकता अग्रवाल, उन्हें सुन लेते हैं क्योंकि रिएक्शन लगातार आ रहे हैं उम्मीदों को लेकर। इस प्रकार से हमारे बजट को 2014 के बाद में एक सिर्फ आय व्यय का लेखा जोखा नहीं रख करके एक देश के जो आधारभूत जो स्ट्रक्चर होता है उसको मजबूत करने की नींव जो रखी गई है, उसी दिशा में अब और एक कदम बढ़ने वाला है। और महिलाओं को लेके, क्योंकि देखिए महिलाएं जो है वो बजट से बहुत ज्यादा प्रभावित होती हैं, उनको अपनी गृहस्थी भी चलानी होती है, डेली का जो उनका काम होता है उससे जुड़ा हुआ होता है। तो महिलाओं के लिए पहले भी बहुत सारी रिबेट्स दी गई हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार से हमारी मोदी सरकार महिलाओं के हर क्षेत्र में काम कर रही है, चाहे आप राजनीतिक सशक्तिकरण हो वहां से लेकर कि या घर व्यापार हो या स्टार्टअप हो, सब में वो काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि ऐसा एक बजट आएगा जो हर महिला उद्यमी से जुड़ा हुआ होगा, उनको बेनिफिट देगा। तो भाजपा प्रदेश मंत्री एकता अग्रवाल को आप सुन रहे थे। और चलिए इस बीच तस्वीरें आपको दिखाते हैं। डॉक्टर जगदीश चंद्र ने शिष्टाचार मुलाकात की है। जयपुर एयरपोर्ट पर आईएनसीआई के प्रिंसिपल डीजी अमिताभ सिन्हा से ये मुलाकात रही। जयपुर एयरपोर्ट पर हुई ये शिष्टाचार मुलाकात। इंटेलिजेंस एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ इनकम टैक्स के अधिकारी भी रहे हैं मौजूद। आईएनसीआई के एडिशनल कमिश्नर गजेंद्र सिंह, आईएनसीआई के निदेशक भंवर सिंह रत्नू, जयपुर एयर इंटेलिजेंस यूनिट के आईटीओ चंद्रशेखर शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। मुलाकात की ये अहम तस्वीर के लिहाज से हम बात चलिए एक छोटा सा ब्रेक लिया, रुकेंगे, जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। फर्स्ट इंडिया प्लस एंटरटेनमेंट के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आपको मिले इस कार्यक्रम की राजस्थान के लिहाज से हम बात करें तो जयपुर में मेट्रो की शुरुआत हुई थी। जब जयपुर में मेट्रो की शुरुआत हुई थी तब जयपुर पूरे देश में गिना चुना शहर था जहां मेट्रो की शुरुआत की गई, लेकिन पिछले कुछ सालों में मेट्रो पे काम नहीं हुआ। लेकिन अब मौजूदा भजनलाल सरकार आई, उन्होंने अपने पहले ही बजट में डबल इंजन की सरकार में उम्मीद भी हम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया अभिषेक जी, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। बात एजुकेशन सेक्टर की भी कर लेते हैं श्वेता, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है। हायर एजुकेशन कर ली, आगे आईआईटी जाना है, लेकिन कैसे आईआईटी सेक्टर को और ज्यादा मजबूत किया जाए, इस पर भी चर्चा हमेशा होती है, काम होता है, लेकिन फिर भी कई राज्य ऐसे हैं जो अछूते रह जाते हैं। इस पर क्या उम्मीद करें एजुकेशन सेक्टर की, अगर हम बात करते हैं या आईटी सेक्टर को मजबूत करने की बात करते हैं भारत? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं इस बार का जो बजट है वो शिक्षा को लेकर ये उम्मीद करता है कि जो जीडीपी का 6% है वो शिक्षा के लिए हो, क्योंकि गत वर्ष बजट में देखा गया कि 4 से 5% है वो जीडीपी का रहा था। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा में इंफ्रास्ट्रक्चर, और उम्मीद की जा रही कि इस बार के जो बजट है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बड़ी घोषणा है वो यहाँ पर हो सकती है। दूसरा बड़ा ये चैलेंज है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को जब लागू किया गया था तो अभी भी उसमें कहीं ना कहीं छोटी छोटी खामियां हैं वो यहाँ पर रह चुकी है, जिसके परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रमुखता से लागू करने के लिए कई तरह की जो चीज़ें हैं वो इस बजट में देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ अगर बात की जाए स्किल डेवलपमेंट, तो स्किल्स को लेकर बड़ी घोषणा है इस बजट में हो सकती है। इसके साथ साथ बात की जाए एआई तकनीक, देखिए बहुत महत्वपूर्ण ये मुद्दा है एआई तकनीक, क्योंकि एआई तकनीक आज के दौर में शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभा सकता है। इसको लेकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जैसे की घोषणा है वो यहाँ पर इस बजट में यहाँ पर हो सकती है। जोधपुर हुआ, जयपुर हुआ, इसमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले जा सकते हैं जिसके माध्यम से
एआई के जरिए, एआई जो तकनीक है उसको किस प्रकार से शिक्षा के अंदर अच्छे तरीके से बनाया जाए, और सबसे प्रमुख बात यह है कि शिक्षा को किस प्रकार से रोजगार मुखी बनाया जाए, यानी कि एजुकेशन को किस प्रकार। प्राइमरली जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि आज तो पॉजिटिव ही दिख रहा है मार्केट, बट सेक्टोरल एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब से चाइना ने क्रिटिकल मिनरल को स्ट्रेटेजिक टूल के रूप में यूज किया है तो हर सरकार के लिए जागृति का समय है कि कैसे वो अपने क्रिटिकल एसेट्स, अब क्रिटिकल एसेट्स जरूरी नहीं है कि वो मिनरल्स ही होंगे, डेफिनेटली भारत सरकार भी क्रिटिकल मिनरल्स पे काम कर रही है और क्रिटिकल मिनरल्स की माइनिंग से ज्यादा उसके कन्वर्जन, उसको कैसे मैग्नेट्स में कन्वर्ट किया जा रहा है उसके ऊपर एक नया फोकस एरिया आ सकता है। देन सेकंड सेक्टर अपना आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज की दुनिया में सबसे पावरफुल टूल जो है अमेरिका के पास, जो अभी सबसे पावरफुल टूल है वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, न्यूक्लियर बॉम्ब तो बहुत सारी कंट्रीज के पास है, पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। और सबसे मजेदार चीज ये है कि इस एआई को डेवलप करने में पूरी दुनिया में भारतीय साइंटिस्ट, भारतीय कंप्यूटर इंजीनियर्स, इन्होंने ये पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। आज आवश्यकता है कि सरकार एआई के ऊपर एक बड़ा प्लेटफॉर्म इंडिया में डेवलप करे, इंडिजिनियस डेवलप कराए, और उसके लिए एक प्रमोशन की कोई स्कीम आनी चाहिए। देन डेटा सेंटर एक बहुत बड़ा एवेन्यू है जहां पे मुझे लगता है कि भारत सरकार को कोई फोकस एरिया रहेगा। देन सोलर पावर का जो बैटरी बैकअप है उसके ऊपर, क्योंकि सोलर पावर पे सरकार काफी काम कर चुकी है, उससे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी इंडिया में आ चुका है, परंतु अब जो फोकस होगा उसके बैटरी बैकअप के ऊपर एक फोकस लेके आ सकती है। प्लस बहुत सारे, जैसे ऑलरेडी $50 बिलियन के इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी इंडिया में प्रपोज्ड हैं, मेटा इन्वेस्ट कर रही है, माइक्रोसॉफ्ट इन्वेस्ट कर रही है, और बहुत सारी कंपनियां, अमेजन इन्वेस्ट कर रही है। आवश्यकता यह है कि वो सारा इन्वेस्टमेंट किस तरीके से भारत में रोजगार डेवलप करेगा, उसके ऊपर कैसे काम होगा, वो सारी चीजें मेरे को लगता है इस बजट का फोकस रहेंगी। और लास्ट पॉइंट, व्यापारी के लिए क्या चाहिए? व्यापारी के लिए आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो पुराने टैक्स के करके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी केसेस चल रहे हैं, उसके लिए एक एमनेस्टी स्कीम इनकम टैक्स में और जीएसटी में, ऐसी एक एक एमनेस्टी स्कीम अगर दोनों में आ जाती है तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में सबसे ज्यादा बेनिफिट जो लोकल व्यापारी है, जो एमएसएमई है, उसको इस चीज से लाभ मिल सकता है। और टैक्सेशन में बहुत ज्यादा कोई परिवर्तन देख नहीं रहा हूं, नहीं मिलेगा। ठीक है नरेंद्र जी, फाइनल कमेंट। मैं बिल्कुल इनकी बात में जोड़ना चाहूंगा कि बाकी में सेक्टर वाइज ये बजट आएगा। आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री ने लगातार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ध्यान दिया है, एग्रीकल्चर पे कुछ आएगा, बिल्कुल बिल्कुल सारे चीजों में मोदी जी जैसे कि अपने वंदे भारत चलाई है, ऐसे ही एयरपोर्टों को लेकर लगातार काम कर रहा है। बात की एआई की, तो हम 10,000 युवाओं को एआई की स्पेशल ट्रेनिंग मोदी जी इस क्षेत्र में देने वाले हैं। इसके साथ ही देखेंगे आप मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग 1 लाख करोड़ का निर्यात कर चुके हैं। इसके साथ ही आप देखेंगे कि रक्षा उपकरणों में 23,000 करोड़ का निर्यात हमने किया है, और 10 लाख युवाओं को अपन प्रशिक्षण के साथ में एग्रीकल्चर में युवाओं के लिए विशेष स्कीम आई हुई है कि वो वहीं पर पैकेजिंग करें, वहीं पर निर्माण करें, वहीं पर उद्योग लगाएं। जैसा कि भाई साहब ने कहा, तो एग्रीकल्चर सेक्टर पर विशेष फोकस होगा, और यही फोकस होगा कि युवा एग्रीकल्चर में आगे बढ़े। ये आने वाला बजट युवाओं के लिए होगा, रोजगारमुखी होगा और रोजगार देने वाला बजट होगा। आने वाले समय में विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त इंतजार रहेगा ये सब चीजें शामिल। राजकुमार जी, फाइनल कमेंट सर। श्वेता जी, हिंदुस्तान का नागरिक चाहता है उसका घर मजबूत हो, व्यापारी चाहता है उसकी दुकान मजबूत हो, उसकी फैक्ट्री मजबूत हो, उसका कारखाना मजबूत हो, झोपड़ी वाला चाहता है उसकी झोपड़ी मजबूत हो, महिला चाहती है मेरी रसोई मजबूत हो, छात्र छात्राएं चाहते हैं हमारा स्कूल का बैग, हमारा कंप्यूटर मजबूत हो, और हर व्यक्ति चाहता है कि मैं मजबूत हूं। भारतीय जनता पार्टी से निवेदन है, वित्त मंत्री से निवेदन है कि ऐसा बजट पेश करें जिससे आम आदमी अपने आप को सुरक्षित और ताकतवर महसूस करे कि देश आगे जो बढ़ रहा है, ये विकसित भारत की जो बात करते हैं उसमें मेरा परिवार और मेरा अपना भी उसमें विकास में योगदान हो तो ज्यादा बेहतर होगा। और एक और निवेदन करना चाहूंगा कि जितने भी सेक्टर्स हैं, किसान चाहता है मेरा खेत मजबूत हो, खिलाड़ी चाहता है मैं मजबूत हूं। आप किसानों की हालत देख के आइए, खिलाड़ियों की हालत देख के आइए हमारे देश के अंदर। ये जो अभी आप बात कर रहे थे शेयर मार्केट, आप बात कर रहे थे सोना चांदी की, शादियों का सीजन चल रहा है, उछाले मार रहे हैं शेयर मार्केट और सोना चांदी, इस तरीके से उछाले मार रहे हैं, लगातार शादियां चल रही है। तो मैं केंद्र सरकार से निवेदन करूंगा, आम व्यक्ति की अगर आप बातों को अपने मद्देनजर रखते हुए बजट पेश करेंगे तो हिंदुस्तान का प्रत्येक तबका अपने आप को ताकतवर और मजबूत महसूस करेगा। ठीक है, ठीक बात आपने कही, लेकिन इसलिए तो ये देखना होगा कि कितना बैलेंस बजट रहता है, क्योंकि चीजें ये भी इंपॉर्टेंट है, दूसरी तरफ जो हम बात कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। बैलेंस कैसे बजट लाती है सरकार, इसी पर ही सबकी नजर। भाग्यश्री जी, फाइनल कमेंट।
देखिए, पूरी उम्मीद है और भरोसा है कि इस बार का बजट जो होगा वो असली बदलाव, असली अवसर और असली सशक्तिकरण पे पूरी रूप से निर्भर होगा। और जैसे कि हम लोग बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, मेरा मानना है कि इस बार का जो बजट होगा वो आत्मनिर्भर नागरिक भी बनाएगा और वो किसी भी क्षेत्र में या किसी भी वर्ग के लिए जो भी सौगातें लाएगा वो नए आयाम स्थापित करेंगे। लेकिन लास्ट में फिर भी ये है कि बजट एक दिन पास होता है लेकिन पूरे साल इंपॉर्टेंट होता है उसका इंप्लीमेंटेशन। तो पूरी उम्मीदें हैं कि उसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो और ग्राउंड रियलिटी, ग्राउंड पे उसकी तस्वीरें, वो जो परिवर्तन की तस्वीरें हम सभी को देखने को मिले। बिल्कुल हुसैन जी, एविएशन भी टूरिज्म से ही कनेक्टेड है और हवाई यात्रा को लेकर बहुत सारी ऐसी चीजें जो बहुत मुश्किलें भी 2025 में देखने को मिले। आपको लगता है कि इस पर भी फोकस केंद्र सरकार को इस बजट में करना चाहिए? निश्चित रूप से मैं ये कहता हूं, एविएशन में लगातार सरकार काम कर रही है और देश के अंदर में हवाई अड्डों की संख्या बढ़ रही है। और निश्चित रूप से जब मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान को भी एक सौगात मिली है। कोटा के अंदर में हवाई अड्डा निर्माण हो रहा है और राजस्थान में आने वाले लेकिन राहत तो तब मिलेगी जब हवाई सफर थोड़ा सस्ता होगा। यहाँ तो कोई लिमिट ही नहीं है। देखें, हवाई सफर इस पे कहीं लगाम लगाने की आपको जरूरत नहीं लगती है कि मनमानी न चले, लगाम हो ताकि हर क्लास का व्यक्ति सफर कर सके, उसके लिए उसकी पहुंच तक हो सके। देखो, बिजनेस में एक नियम होता है कि डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है। अगर सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है तो निश्चित रूप से उस सेक्टर में प्राइस बढ़ती है। तो ये इसलिए तो सप्लाई बढ़ाने की तो बात है कि इसको भी क्यों ना इस पर काम किया जाए। निश्चित रूप से सरकार ने पिछली बार भी जब प्राइस बढ़ी थी तो सरकार ने प्रयास किया था कि प्राइस में कंट्रोल हो और आने वाले दिनों में भी सरकार इसमें पर्यटन लगातार करेगी। और पर्यटन सेक्टर को बढ़ाने की जहां तक बात है, विदेशों के अंदर में देश के पर्यटन स्थलों को दिखाने के लिए लगातार ट्रेवल मार्ट का आयोजन सरकार कर रही है और हमारे देश स्तर के और हमारे राजस्थान राज्य स्तर के पर्यटन सेक्टर के जुड़े हुए लोग वहां जाते हैं और देश पर्यटन स्थलों का वहां प्रचार करते हैं। निश्चित रूप से कोरोना के काल में विदेशी पर्यटकों की संख्या देश में कम हुई थी क्योंकि विदेशों में जो लोगों के आय के स्रोत खत्म हो गए थे कोरोना के कारण। अब धीरे धीरे विदेशी पर्यटकों की संख्या भी बढ़ रही है और निश्चित रूप से मैंने आपको बताया कि इस देश के जो पर्यटक है, इस देश के अंदर में आज एक भारतीय अपने आप को सुरक्षित मानने लगा है, उसकी आय के स्रोत को सुरक्षित मानने लगा है। जब आय के स्रोत को सुरक्षित मानता है तो अपने पैसों को वो पर्यटन के रूप में जाकर के खर्च करता है। और निश्चित रूप से इस देश में जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है, देश का प्रत्येक आदमी अपने सेक्टर में मजबूत बना है, उसी हिसाब से पर्यटक भी बढ़े हैं। 140 करोड़ पर्यटक देश के एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, वो 180 करोड़ तक पहुंचे और लगातार आने वाले दिनों में भी पर्यटकों की संख्या लगातार इस देश में बढ़ेगी, देशी भी और विदेशी भी। बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि इनकम भी लोगों की बढ़े, सेविंग भी बढ़े और उसका इस्तेमाल वो इस तरह से पहुंचे। मिनिमम मैक्सिमम दोनों निश्चित होना चाहिए। जैसे मिनिमम तो निश्चित होता है, मैक्सिमम निश्चित ही नहीं है इनका। इच्छा होती जो ही ले लेते हैं। किसी को इमरजेंसी है, किसी व्यक्ति का कोई एक्सीडेंट हो गया है या कोई बीमार पड़ गया है या कोई डेथ हो गई है, उसको जाना अर्जेंट होता है तो उस टाइम तो 3000 की रेट ले लेते, 25,000 रुपए। तो ये तो सरकार ने पाबंदी भी लगाई थी जब रेटें बढ़ रही थी तो तो इसमें थोड़ा नहीं बढ़ाओगे तो सरकार इस पे काम करेगी और आने वाले समय में इसलिए उम्मीद है कि क्या इसमें परमानेंट पे थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए। मैक्सिमम रेट फिक्स होनी चाहिए, मतलब 10,000 से ज्यादा नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे। और इसलिए भी ना कि इतनी मुश्किलें इससे पहले नहीं आई जो इंडिगो की फ्लाइट को लेकर इंडिगो का टाइम ज्यादा खड़ी हुई थी, उसके बाद से ये सवाल उठ रहे थे सरकार पर भी। यहाँ से बेंगलोर का 3,000 से लेकर 25,000 किराया। सोल्यूशन इसका कुछ ना कुछ माननी पड़ेगी कि मोदी जी के आने के बाद में बहुत ज्यादा लोग हवाई सफर करने लग गए। हम जैसे लोग भी हवाई सफर करने आजकल मोदी जी के एक लाइन में कमेंट। श्वेता जी, मोदी जी को गलतफहमी है कि पूरी दुनिया को जला रहे हैं। इन बीजेपी वालों को बहुत गलतफहमी है कि पूरी दुनिया ही जला रहे हैं। आप देख रहे हैं हवाई यात्राएं कितनी सुरक्षित हो गई है। अभी आपने देखा इंडिगो के अंदर देखा आपने, यात्री परेशान हो रहे थे, रो रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोई फुर्सत नहीं थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं बीजेपी वाले अपनी गलतफहमी निकाल ले, पूरी दुनिया ही जला रहे हैं। ये भ्रष्टाचारी कांग्रेस लगातार हार रही है, फिर भी बड़बोलापन छोड़ती नहीं है। आने वाले चलिए ठीक है, अभी एक बार बजट पे भी फोकस कर लेते हैं नरेंद्र जी, बजट पर भी फोकस कर लेते हैं। उसके बाद के लिए भी थोड़ी एनर्जी बचा के रखिए, ये थोड़ी एनर्जी बचा कर रखिए क्योंकि 11 बजने वाले हैं। संसद भवन में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई है, बजट 2026-27 को मिली केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी। थोड़ी देर में बजट पेश करेंगी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। लगातार नवी बार है जब बजट पेश करेंगे निर्मला सीतारमण और कुछ सेकंड्स
जिसका इंतजार और है, 11 बजने वाले हैं और जिसका इंतजार सभी कर रहे हैं। लगातार है नवी बार जब बजट पेश करेंगी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, और बजट की ये कॉपी आप देख सकते हैं जो संसद भवन पहुंच चुकी है। कैबिनेट मीटिंग भी यहां पर हो चुकी है और अब इंतजार है बजट का। थोड़ी देर में बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। बेहद अहम है। अब देखिए चर्चा लगातार हम हर सेक्टर को लेकर कर रहे थे, जिस तरह से एक्सपर्ट्स भी बता रहे थे क्या कुछ हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। कई ऐसी बातें जिसमें उम्मीद किसी को बहुत ज्यादा लग रही है और किसी को लग रहा है कि इसमें इस बार कुछ नहीं हो सकता है, और यही बजट को और भी खास बना देता है कि आखिर जब इतनी तरह की बातें चर्चा में सामने आ रही है तो आखिर मुहर किस में लग रही होगी, किसे प्राथमिकता में लिया है सरकार ने इस बजट में। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आ चुके हैं आसन पर, और अब आइटम नंबर 1 माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। आइटम नंबर 1। Sir, with your permission, I rise to lay on the table a copy each of the following papers, Hindi and English versions, under Article 281 of the Constitution. Report for 2026 to 2031, Volume 1, Main Report of the 16th Finance Commission. 2. Report for 2026-2031, Volume 2, Annexures of the 16th Finance Commission. Number 3, explanatory memorandum as to the action taken on the recommendations contained in the above report. आइटम नंबर 2 माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। Honorable Speaker, sir, on the sacred occasion of Magh Purnima and the birth anniversary of Guru Ravidas, I present the budget for the year 2026-2027. Since we assumed office 12 years ago, India's economic trajectory has been marked by stability, fiscal discipline, sustained growth, and moderate inflation. This is the result of conscious choices we have made, even in times heightened uncertainty and disruption. Our government, led by Honorable Prime Minister Modi, has decisively and consistently chosen action over ambivalence, reform over rhetoric, and people over populism. We have pursued far-reaching structural reforms, fiscal prudence and monetary stability, whilst maintaining a strong thrust on public investment. Keeping Atmanirbharta as a lodestar, we have built domestic manufacturing capacity, energy security, and reduced critical import dependencies. Simultaneously, we have ensured that citizens benefit from every action of the government, undertaking reforms to support employment generation, agricultural productivity, household purchasing power, and universal services to people. These measures have delivered a high growth rate of around 7% and helped us make substantial strides in poverty reduction and improvement in the lives of our people. Today, we face an external environment in which trade and multilateralism are imperiled and access to resources and supply chains are disrupted. New technologies are transforming production systems while sharply increasing demands on water, energy, and critical minerals. India will continue to take confident steps towards Vikasit Bharat, balancing ambition with inclusion. As a growing economy with expanding trade and capital needs, India must also deeply integrate
India must also remain deeply integrated with global markets, exporting more and attracting stable long-term investment. As I begin Part A, I want to express my gratitude to the people for standing firmly with us as we forge our way together towards becoming one of the largest economies of the world. Our aim is to transform aspiration into achievement and potential into performance as we ensure that the dividends of growth reach every farmer, the scheduled caste, the scheduled tribes, the nomads, the youth, the poor and the women. In Vikasit Bharat Young Leaders Dialogue 2026, several innovative ideas were shared with our Prime Minister, which have inspired many of the proposals, making this a unique Yuva Shakti-driven budget. Our government's sankalp is to focus on our poor, underprivileged and the disadvantaged. To deliver on this sankalp, and given that this is the first budget prepared in Kartavya Bhavan, we are inspired by three Kartavya. Our first Kartavya is to accelerate and sustain economic growth by enhancing productivity and competitiveness and building resilience to volatile global dynamics. Our second Kartavya is to fulfill aspirations of our people and build their capacity, making them strong partners in India's path to prosperity. Our third Kartavya, aligned with our vision of Sabka Saath, Sabka Vikas, is to ensure that every family, community, region and sector has access to resources, amenities and opportunities for meaningful participation. This threefold approach requires a supportive ecosystem. The first requirement is to sustain the momentum of structural reforms, continuous, adaptive and forward-looking. Second, a robust and resilient financial sector is central to mobilizing savings, allocating capital efficiently and managing risks. Third, cutting-edge technologies, including AI applications, can serve us as force multipliers for better governance. Reform Express. Our government has undertaken comprehensive reforms towards creating employment, boosting productivity and accelerating growth. After the Prime Minister's announcement on Independence Day in 2025, over 350 reforms have been rolled out. This includes GST simplification, notification of labor codes, and rationalization of mandatory quality control orders. High-level committees have been formed, and in parallel, the central government is working with the state governments on deregulation and reducing compliance requirements. The Reform Express is well on its way and will maintain its momentum to help us fulfill our Kartavya. I now move to specific proposals. Under our first Kartavya, to accelerate and sustain economic growth, I propose interventions in 6 areas. 1. Scaling up manufacturing in 7 strategic and frontier sectors. 2. Rejuvenating legacy industrial sectors. 3. Creating champion MSMEs. 4. Delivering a powerful push for infrastructure. 5. Ensuring long-term security and stability. And 6. Developing city economic regions. Scaling up of manufacturing in 7 strategic and frontier sectors. Biopharma Shakti, meaning
biopharma strategy for health advancement through knowledge, technology, and innovation. India's disease burden is observed to be shifting towards non-communicable diseases like diabetes, cancer, and autoimmune disorders. Biologic medicines are key to longevity and quality of life at affordable costs. To develop India as a global biopharma manufacturing hub, I propose the Biopharma Shakti with an outlay of 10,000 crores over the next 5 years. This will build the ecosystem for domestic production of biologics and biosimilars. The strategy will include a biopharma-focused network with 3 new national institutes of pharmaceutical education and research, popularly known as NIPERs, and upgrading 7 existing ones. It will also create a network of 1,000 accredited India clinical trials sites. We propose to strengthen the Central Drug Standard Control Organization to meet global standards and approve timeframes through approval timeframes through a dedicated scientific review cadre and specialists. India's semiconductor mission 1.0 expanded India's semiconductor sector capabilities. Building on this, we will launch ISM 2.0 to produce equipment and materials, design full-stack Indian IP, and fortify supply chains. We will also focus on industry-led research and training centers to develop technology and skilled workforce. The Electronics Components Manufacturing Scheme, launched in April 2025, with an outlay of 22,919 crores, already has investment commitments at double the targets. We propose to increase the outlay to 40,000 crores to capitalize on this momentum. A scheme for rare earth permanent magnets was launched in 2025 November. We now propose to support the mineral-rich states of Odisha, Kerala, Andhra Pradesh, and Tamil Nadu to establish dedicated rare earth corridors to promote mining, processing, research, and manufacturing. To enhance domestic chemical production and reduce import dependency, we will launch a scheme to support states in establishing 3 dedicated chemical parks through challenge route on a cluster-based plug-and-play model. Strong capital goods. Strong capital goods capability is a determinant of productivity and quality across different sectors. Towards building this capacity, I propose the following. High-tech tool rooms will be established by central public sector enterprises at 2 locations as digitally enabled automated service bureaus that locally design, test, and manufacture high-precision components at scale and at lower cost. 2. A scheme for enhancement of construction and infrastructure equipments will be introduced to strengthen domestic manufacturing of high value and technologically advanced CIE. This can range from lifts in a multi-storied apartment or firefighting equipment in multiplexes, large or small, and to tunnel boring equipments for building metros and high-altitude roads. I also propose a scheme for container manufacturing to create a globally competitive container manufacturing ecosystem with a budgetary allocation of 10,000 crores over a 5-year period. For the labor-intensive textile sector, I propose an integrated program with 5 subparts. 1.
the National Fiber Scheme for self-reliance in natural fibers, such as silk, wool and jute, man-made fibers, and new age fibers. Textile expansion and employment scheme to modernize traditional clusters with capital support for machinery, technology upgradation, and common testing and certification centers. 3. The National Handloom and Handicraft Program to integrate and strengthen existing schemes and ensure targeted support for weavers and artisans. Tex Eco Initiative to promote globally competitive and sustainable textiles and apparels. Samarth 2.0 to modernize the upgrade the textile skilling ecosystem through collaboration with industry and academic institutions. Further, I propose to set up mega textile parks in challenge mode. They can also focus on bringing value addition to technical textiles. I propose to launch the Mahatma Gandhi Gram Swaraj initiative to strengthen khadi, handloom and handicrafts. This will help in global market linkage and branding. It will streamline and support training, skilling, quality of process and production. This will benefit our weavers, village industries, one district, one product ODOP initiative, and also our rural youth. India has the potential to emerge as a global hub for high quality, affordable sports goods. I propose a dedicated initiative for sports goods that will promote manufacturing, research, and innovation in equipment design as well as material sciences. Rejuvenation of legacy industrial clusters. I propose to introduce a scheme to revive 200 legacy industrial clusters to improve their cost competitiveness and efficiency through infrastructure and technology upgradation. Creating champion SMEs and supporting micro enterprises. Recognizing MSMEs as a vital engine of growth, I propose a three-pronged approach to help them grow as champions. Equity support. I propose to introduce a dedicated 10,000 crores SME growth fund to create future champions, incentivizing enterprises based on select criteria. I also propose to top up the Self-Reliant India Fund set up in 2021 with 2,000 crores to continue support to micro enterprises and maintain their access to risk capital. Liquidity support. With TREDS, more than 7 lakh crore has been made available to MSMEs. To leverage its full potential, I propose 4 measures. 1. Mandate TREDS as the transaction settlement platform for all purchases from MSMEs by CPSEs, serving as a benchmark for other corporates. 2. Introduce a credit guarantee support mechanism through CGT-MSE for invoice discounting on TREDS platform. 3. Link GEM with TREDS for sharing information with financiers about government purchases from MSMEs, encouraging cheaper and quicker financing. 4. Introduce TREDS receivables as asset-backed securities, helping develop a secondary market, enhancing liquidity and settlement of transactions. Professional support. Government will facilitate professional institutions such as the ICAI, ICSI, ICMAI to design short-term modular courses and practical tools
to develop a cadre of corporate mitras, especially in Tier 2 and Tier 3 towns. These accredited para-professionals will help MSMEs meet compliance requirements at affordable costs. Infrastructure. During this past decade, our government has undertaken several initiatives for large-scale enhancement of public infrastructure, including through new financing instruments such as Infrastructure Investment Trust (InvITs) and Real Estate Investment Trust (REITs), and institutions like NIIF and NABFID. We shall continue to focus on developing infrastructure in cities with over 5 lakh population, that is Tier 2, Tier 3 cities, which have expanded to become growth centers. Public capital expenditure has increased manifold from 2 lakh crore in 2014-15 to an allocation of 11.2 lakh crore in BE 25-26. In this coming year, that is financial year 2026-27, I propose to increase it to 12.2 lakh crores to continue the momentum. To strengthen the confidence of private developers regarding risks during infrastructure development and construction phase, I propose to set up an infrastructure risk guarantee fund to provide prudentially calibrated partial credit guarantee to lenders. Over the years, REITs have emerged as a successful instrument for asset monetization. I propose to accelerate recycling of significant real estate assets of the CPSEs through the setting up of dedicated REITs. To promote environmentally sustainable movement of cargo, I propose to 1. Establish new dedicated freight corridors connecting Dankuni in the east to Surat in the west. Operationalize 20 new national waterways over the next 5 years, starting with National Waterways 5 in Orissa to connect mineral-rich areas of Talcher and Angul and industrial centers like Kalinga Nagar to the ports of Paradeep and Dhamra. Training institutes will be set up as regional centers of excellence for development of required manpower for these waterways. This will benefit youth in the entire stretch of the waterways to train and acquire skills. Further, a ship repair ecosystem catering to inland waterways will also be set up at Varanasi and Patna. And C, launch a coastal cargo promotion scheme for incentivizing a modal shift from rail to road to increase the share of inland waterways and coastal shipping from 6% to 12% by 2047. To enhance last mile and remote connectivity and promote tourism, I propose to give incentives to indigenize manufacturing of seaplanes. A seaplane VGF scheme will be also introduced to provide support for operations. Carbon capture, utilization and storage. Aligning with the roadmap launched in December 2025, the carbon capture, utilization and storage technologies at scale will achieve higher readiness and in end-use application across 5 industrial sectors, including power, steel, cement, refineries, and chemicals. An outlay of 20,000 crore is proposed over the next 5 years for this purpose. City economic regions. Cities are India's engines of growth, innovation, and opportunities. We shall now focus on Tier 2, Tier 3 cities, and even temple towns
which need modern infrastructure and basic amenities. This budget aims to further amplify the potential of cities to deliver the economic power of agglomerations by mapping city economic regions based on their specific growth drivers. An allocation of 5,000 crore per CER over 5 years is proposed for implementing their plans through a challenge mode with a reform-cum-result-based financing mechanism. In order to promote environmentally sustainable passenger systems, we will develop 7 high-speed rail corridors between cities as growth connectors, namely Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi, Varanasi to Siliguri. Financial sector. The Indian banking sector today is characterized by strong balance sheet, historic highs in profitability, improved asset quality, and coverage exceeding 98% of villages in the country. At this juncture, we are well placed to futuristically evaluate the measures needed to continue on the path of reform-led growth of this sector. I propose setting up a high-level committee on banking for Vikasit Bharat. High-level committee on banking for Vikasit Bharat to comprehensively review the sector and align it with India's next phase of growth, while safeguarding financial stability, inclusion, and consumer protection. The vision for NBFCs for Vikasit Bharat has been outlined with clear targets for credit disbursement and technology adoption in order to achieve scale and improve efficiency in the public sector NBFCs. As a first step, it is proposed to restructure the Power Finance Corporation and Rural Electrification Corporation. I propose a comprehensive review of the foreign exchange management non-debt instruments rules to create a more contemporary, user-friendly framework for foreign investments consistent with India's evolving economic priorities. Corporate bond market. I propose to introduce a market-making framework with suitable access to funds and derivatives on corporate bond indices. I also propose to introduce total return swaps on corporate bonds. Municipal bonds. To encourage the issuance of municipal bonds of higher value by larger cities, I propose an incentive of 100 crore rupees for a single bond issuance. 100 crore rupees for a single bond issuance of more than 1,000 crore. The current scheme under Amrit which incentivizes issuances up to 200 crores only, will also continue to support smaller and medium towns. That will also continue to support the smaller and medium towns. Ease of doing business. Individual persons resident outside India, PROI, will be permitted to invest in equity instruments of listed Indian companies through the portfolio investment scheme. It is also proposed to increase the investment limit for an individual PROI under the scheme from 5% to 10%, with an overall investment limit for all individual PROIs to 24% from the current 10%. Emerging technologies including AI. 21st century is technology driven.
Adoption of technology is for the benefit of all people. Farmers in the field, women in STEM, youth keen to upskill, and Divyangjan to access newer opportunities. The government has taken several steps to support new technologies through AI Mission, National Quantum Mission, Anusandhan National Research Fund, and Research and Development and Innovation Fund. Our second kartavya is to fulfill aspirations and build capacities. Close to 25 crore individuals have come out of multi-dimensional poverty through a decade of our government's sustained and reform-oriented efforts. Our government has therefore decided to place a renewed emphasis on the service sector to provide a pathway to fulfilling aspirations of a youthful India with the following measures. I propose to set up a high-powered education to employment and enterprises standing committee to recommend measures that focus on services sector as a core driver of Vikasit Bharat. This will make us a global leader in services with a 10% global share by 2047. The committee will prioritize areas to optimize the potential for growth, employment, and exports. They will also assess the impact of emerging technologies, including AI, on jobs and skill requirements and propose measures thereof. To create a range of skilled career pathways, a new range of skilled career pathways for our youth, I propose interventions in the following sectors. Health. Existing institutions for allied health professionals will be upgraded and new AHP institutions established in private and government sectors. This will cover 10 selected disciplines, including optometry, radiology, anesthesia, OT technology, applied psychology and behavioral health, and add 1 lakh AHPs over the next 5 years. A strong care system covering geriatric and allied care services will be built. A variety of NSQF aligned programs will be developed to train multi-skilled caregivers, combining core care and allied skills such as wellness, yoga, and operation of medical assistive devices. In the coming year, 1.5 lakh caregivers will be trained. Hubs for medical value tourism. To promote India as a hub for medical tourism services, I propose to launch a scheme to support states in establishing 5 regional medical hubs in partnership with the private sector. These hubs will serve as integrated healthcare complexes that combine medical, educational, and research facilities. They will have Ayush centers, medical value tourism facilitation centers, and infrastructure for diagnostics, post-care, and rehabilitation. These hubs will provide diverse opportunities, job opportunities for health professionals, including doctors and AHPs. Ancient Indian yoga, already respected in several parts of the world, was given a mass global recognition when Honorable Prime Minister took it to the UN. Post-COVID, Ayurveda gained a similar global acceptance and recognition. Exporting quality Ayurveda products helps farmers who grow the herbs and youth who process the products. To meet growing global demand, a few more steps are being taken. I propose to 1.
set up 3 new All India Institutes of Ayurveda. 2. Upgrade Ayush pharmacies and drug testing labs for higher standards of certification ecosystem and make available more skilled personnel. 3. Upgrade the WHO Global Traditional Medicine Center in Jamnagar to bolster evidence-based research, training and awareness for traditional medicine. Animal husbandry. Livestock contributes to close to 16% of farm income, including of poor and marginal households. To scale up availability of veterinary professionals by more than 20,000, I propose to roll out a loan-linked capital subsidy support scheme for establishment of veterinary and para-veterinary colleges, veterinary hospitals, diagnostic laboratories, and breeding facilities in private sector. Collaboration between Indian and foreign institutions will also be facilitated. Orange economy. India's animation, visual effects, gaming and comics sector, ABGC sector, is a growing industry projected to require 2 million professionals by 2030. I propose to support the Indian Institute of Creative Technologies, Mumbai, in setting up ABGC content creator labs in 15,000 secondary schools all over the country and 500 colleges. The Indian design industry is expanding rapidly, and yet there is a shortage of Indian designers. I propose to establish, through challenge route, a new National Institute of Design to boost design education and development in the eastern region of India. Education. Our government will support states through challenge route in creating 5 university townships in the vicinity of major industrial and logistics corridors. These planned academic zones will host multiple universities, colleges and research institutions, skill centers and residential complexes. In higher education, STEM institutions, prolonged hours of study and laboratory work pose some challenges for girl students. Through VGF, viability gap funding and capital support, 1 girls' hostel will be established in every district. To promote astrophysics and astronomy via immersive experiences. 4 telescope infrastructure facilities will be set up or upgraded. The National Large Solar Telescope, the National Large Optical Infrared Telescope, the Himalayan Chandra Telescope, and the Cosmos 2 Planetarium. Tourism. The tourism sector has the potential to play a large role in the employment generation, forex earnings, and expanding the local economy. I propose to set up a National Institute of Hospitality by upgrading the existing National Council for Hotel Management and Catering Technology. It will function as a bridge between academia, industry, and government. I also propose a pilot scheme for upskilling 10,000 guides in 20 iconic tourist sites through a standardized, high-quality, 12-week training course in hybrid mode in collaboration with the Indian Institute of Management. A national destination digital knowledge grid will be established to
to digitally document all places of significance, cultural, spiritual, and heritage. This initiative will create a new ecosystem of jobs for local researchers, historians, content creators, and technology partners. India has the potential and opportunity to offer world-class trekking and hiking experience. We will develop ecologically sustainable mountain trails in Himachal Pradesh, Uttarakhand, and Jammu Kashmir. Also in Araku Valley in the Eastern Ghats and Podigai Malai in the Western Ghats. Turtle trails along key nesting sites in the coastal areas of Odisha, Karnataka, and Kerala. And 3 bird watching trails along the Pulikat Lake in Andhra Pradesh, Tamil Nadu. It's on the border. Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister, we established the International Big Cat Alliance in 2024. This year, India is hosting the first ever Global Big Cat Summit, where heads of governments and ministers from 95 range countries will deliberate on collective strategies for conservation. Heritage and culture tourism. I propose to develop 15 archaeological sites, including Lothal, Dolavira, Rakhi Gadi, Adichanallur, Saranath, Hastinapur, and Leh Palace into vibrant experiential cultural destinations. Excavated landscapes will be open to the public through curated walkways. Immersive storytelling skills and technologies will be introduced to help conservation labs, interpretation centers, and guides. The sports sector provides multiple means of employment, skilling, and job opportunities. Taking forward the systematic nurturing of sports talent, which is set in motion through the Khelo India program earlier, I propose to launch a Khelo India mission to transform the sports sector over the next decade. The mission will facilitate an integrated talent development pathway supported by training centers, which are foundational, intermediate, and elite levels. B, systematic development of coaches and support staff. C, integration of sports science and technology. D, competitions and leagues to promote sports culture and provide platforms. And E, development of sports infrastructure for training and competition. Our third Kartavya aligns with our vision of Sabka Saath, Sabka Vikas towards Vikasit Bharat. This requires targeted efforts for 1, increasing farmer incomes through productivity enhancement and entrepreneurship, with special attention to small and marginal farmers. B, empowering Divyang Jan through access to livelihood opportunities, training, and high-quality assistive devices. C, empowering the vulnerable to access mental health and trauma care. D, focus on the Purvodaya states and the Northeast region to accelerate development and employment opportunities. Fisheries. We will undertake initiatives for integrated development of 500 reservoirs and Amrit Sarovars. 2, strengthen the fisheries value chain in coastal areas and enable market linkages involving startups and women-led groups together with fish farmer producer organizations. Animal husbandry. To provide quality employment opportunities in rural and peri-urban areas, we will support the animal husbandry sector in entrepreneurship development through A, credit-linked subsidy program, B, scaling up and modernization of livestock enterprises, C, enhanced creation of livestock,
dairy and poultry. I'll read that again. Enhance creation of livestock, dairy and poultry focused integrated value chains. And D, encourage creation of livestock farmer producer organizations. High value agriculture. To diversify farm outputs, increase productivity, enhance farmers' incomes, and create new employment opportunities, we will support high value crops such as coconut, sandalwood, cocoa, cashew in the coastal areas, agar trees in northeast, and nuts such as almonds, walnuts, and pine nuts in our hilly regions. These, all of them, will be supported. India is the world's largest producer of coconuts. About 30 million people, including nearly 10 million farmers, depend on coconuts for their livelihood. To further enhance competitiveness in coconut production, I propose a coconut promotion scheme to increase production and enhance productivity through various interventions, including replacing and non-productive trees with new saplings or plants or varieties in major coconut growing states. A dedicated program is proposed for Indian cashew and cocoa to make India self-reliant in raw cashew and coconut production and processing, enhance export competitiveness, and transform Indian cashew and Indian cocoa into premium global brands by 2030. Sandalwood. Sandalwood is closely linked to India's social and cultural heritage. Our government will partner with state governments to promote focused cultivation and post-harvest processing to restore the glory of the Indian sandalwood ecosystem, to rejuvenate old, low-yielding orchards, and expand high-density cultivation of walnuts, almonds, and pine nuts. We will support a dedicated program to enhance farmer incomes and in bringing value addition by engaging youth. Bharat Vistar, that is virtually integrated system to access agricultural resources. I propose to launch Bharat Vistar, a multilingual AI tool that shall integrate the AgriStack portals and the ICAR package on agricultural practices with AI systems. This will enhance farm productivity, enable better decisions for farmers, and reduce risk by providing customized advisory support. She Marts for rural women-led enterprises. Building on the success of Lakpati Didi program, I propose to help women take the next step from credit-linked livelihoods to being owners of enterprises. Self-help entrepreneur, She Marts will be set up as community-owned retail outlets within the cluster-level federations through enhanced and innovative financing instruments. Empowering Divyangjan. Divyangjan Kaushal Yojana. Information technology, AVGC sectors, hospitality and food and beverages sectors often offer task-oriented and process-driven roles which are suitable for Divyangjan. We will ensure dignified livelihood opportunities through industry-relevant and customized training specific to each Divyangjan group. Divyang Sahara Yojana. Timely access to high-quality assistive devices for all eligible Divyangjan is a fundamental need. I propose to 1. Support the Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, ALIMCO, to set up and to scale up production of assistive devices, invest in R&D and AI integration,
strengthen PM Divyasha Kendras, and support setting up of assistive technology marts as modern retail style centers where Divyangjan and senior citizens can see, try and purchase assistive products. Reaffirming our commitment to mental health and trauma care. There are no national institutes for mental health care in North India. We will therefore set up a NIMHANS 2 and also upgrade national mental health institutes in Ranchi and in Tezpur as regional apex institutions. Emergencies expose families, particularly the poor and vulnerable, to unexpected expenditure. We will strengthen and increase these capacities by 50% in district hospitals by establishing emergency and trauma care centers. Focus on Purvodaya states and northeastern regions. Purvodaya, I propose the development of an integrated East Coast industrial corridor with a well-connected node at Durgapur, creation of 5 tourism destinations in 5 Purvodaya states, and the provision of 4,000 e-buses. Buddhist sites in northeastern region. The northeastern region is a civilizational confluence of Theravada and Mahayana or Vajrayana traditions. I propose to launch a scheme for development of Buddhist circuits in Arunachal Pradesh, Sikkim, Assam, Manipur, Mizoram and Tripura. The scheme will cover preservation of temples and monasteries, pilgrimage interpretation centers, connectivity and pilgrim amenities. 16th Finance Commission. On 17th November 2025, the 16th Finance Commission submitted its report to the President. As mandated under Article 281 of the Constitution, the government is to lay the report along with the explanatory memorandum on the action taken report on the recommendations of the Commission